क्लास बीकॉम सेमेस्टर 1, सब्जेक्ट IVS entrepreneurship. मैं सैयद जाहिद परवेज. Today I will discuss about the project implementation and regarding the what is the project and what is project implementation. Okay. Project implementation is the process of putting a project plan into action to produce the deliverable, otherwise known as the product or services for client or stakeholder. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट प्लान को एक्शन में तब्दील करता है ना. It is a very important part of any organization that whatever the project is being made, it must be implemented. There are several project implementation. First, you will have to plan what project is to be started or implemented, and then you analysis process, design, implementation, and investigation, and then maintenance. Implementation of project is sustainable sanitation and water management is complex. It requires the coordination of a wide range of activities, diverse institutional arrangement, and different time frame. There is not one typical project in water and sanitation. The action vary from the construction of a new infrastructure to the introduction of new ways of working. Project is the area cover issues such as social development, health, environmental sustainability, institutional strengthening, technical implementation, pilot plants, service delivery, social marketing, hygiene promotion, and sanitation promotion and capacity building. It is important to take into account the independently of the nature of the project. Implementation takes time, usually more than it's planned, and that many external constraints can appear. Now, I would like to express my views regarding the what is the project implementation. Okay. As you have been seen, and you can screenshot of your mobile phone my presentation. It will help you in your coming examination regarding the entrepreneurship. Project implementation is the segment wherein vision and plan come to be reality. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है एक तरह का सेगमेंटेशन है. क्या चीज का? आपके विजन का, आपके प्लान का, जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. This is the logical conclusion after evaluating, deciding,
reasoning, planning, applying for finances, and finding the monetary resources of challenges. ये एक तरह का लॉजिकल कंक्लूजन है after the evaluating, deciding, visioning, planning, applying for finances, and finding the monetary resources of the challenge. The implementation degree of the project cycle is in many approaches the most critical, as it's miles in the course of this stage that planned advantages are delivered. All different stages within the cycle are therefore essentially supportive of this implementation stage. A task has to be implemented successfully while the allocation of undertaking obligation to the assignment team in the organization. The purpose of implementation is to put action into the operation, to deliver the result, achieve the purpose, and contribute effectively to the overall project objective of the project, to manage the available resources efficiently, and to monitor and report on progress. इसे देख लें. The purpose of project implementation, एक project implementation के क्या-क्या purposes होते हैं? To put the action plan into operation, to deliver the result, achieve the purpose, and contribute effectively to the overall objective of the project, to manage the available resource efficiently, and to monitor and report on progress. Things we must do during the project implementation. कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में रखना जरूरी है? Update the stakeholder analysis to ensure that all the needful stakeholders, primary and secondary, are invited. Reassess the risk of the project. Monitor and review the progress that the project is making towards achieving its objectives. Feed the learning from monitoring and reviewing returned into the project design. Return to the log frame and make adjustment or upgrades in which appropriate. Steps for project implementation. अब एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए. नंबर 1, क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ आउटकम्स रिक्वायर्ड. क्या क्या आउटकम्स हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो करना. ठीक है. Allocate the champion for each outcome. Okay. Determine what action need to be taken for outcomes to be achieved. Next. Establish roles, budgets, and accountability. Step up a tracking sheet to monitor progress. Follow a project management methodology, and schedule and undertake a review in the 6 months. This is the 7 steps of project implementation. कि एक प्रोजेक्ट को कैसे implement किया जाएगा. What are the steps are there? Okay.
क्लियर है? तो मैंने इसके बारे में बताया कि सबसे पहले क्या करना होगा कि क्या जो इस प्रोजेक्ट का क्या क्या आउटकम्स हैं उसको क्या करना होगा, हम लोग को लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे भाई, एलोकेट द चैंपियन ऑफ ईच आउटकम। उस आउटकम में सबसे बेहतरीन जो चीज होगा उसको हम लोग को एलोकेट करना है। एलोकेट आउटकम को करने के बाद फिर हम लोग को डिटरमाइन करना है कि व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन, किस तरह का एक्शन हमको लेना है ताकि ये सारे आउटकम्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एक फिर इस्टेब्लिश रोल्स, हर एक चीज का रोल को इस्टेब्लिश करना है, बजट तैयार करना है, एंड अकाउंटेबिलिटी, और उसका अकाउंटेबिलिटी को ये करना है। फिर क्या करेंगे, सेटअप ए ट्रैकिंग शीट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। अब क्या है, ट्रैकिंग शीट एक तैयार करेंगे जिससे हम मॉनिटर करेंगे कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जा रहा है। फिर इतना कुछ करने के बाद फॉलो ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेथोडोलॉजी फिर काम करेंगे। एंड द लास्ट वन इज शेड्यूल एंड अंडरटेक ए रिव्यू इन द 6 मंथ। पहला 6 महीने में क्या क्या शेड्यूल तैयार किया गया उसको अंडरटेक, उसको रिव्यू करना है। ठीक है ना, दिस आर दी 7 स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नाउ I come to the main point of that project implementation chapter, the phases of project implementation. क्या क्या फेज होगा? सबसे पहला प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेज, प्रोजेक्ट एक्टिवेशन करने वाला फेज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशन फेज, ये दो तरह का होता है, प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेज एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन फेज। अब प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेज क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है देखते रहिए। दिस इज द फेज, this is the phase where arrangements are made for project implementation। इस फेज में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए सारा का सारा अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, मेकिंग अरेंजमेंट टू द स्टार्ट। ओके, फिर क्या है, प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेज इन्वॉल्व the coordination and allocation of resources to make the project operational। प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेज में इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या क्या ये है ना। ठीक है, अब आइए इसका सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट ऑपरेशन फेज। अब ऑपरेशन फेज में क्या क्या है? ठीक है, क्या है भाई, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इसका अपना नाम, दिस फेज इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट इज द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो फेज है। प्रोजेक्ट इनपुट आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट्स टू अचीव द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट के क्या क्या इनपुट्स एंड ट्रांसफर्ड इनटू द आउटपुट, इनपुट करके क्या आउटपुट हासिल हुआ, ये इमीडिएट आपको ऑब्जेक्टिव दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं?
है ना। इसमें नंबर ए है फैक्टर्स दैट लीड टू द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। पहला, पॉलिटिकल कमिटमेंट, सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, केयरफुल ऑपरेशन, गुड मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, बात सही से आ रही है ना। फिर क्या है, सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, केयरफुल प्रिपरेशन, गुड मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स दैट लीड टू द फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स दैट लीड टू द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकते हैं, फेलियर कर सकते हैं। नंबर एक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंस की कमी हो जाना। इट इज अ ग्रेट लीड ऑफ अनसक्सेसफुल ऑफ योर प्रोजेक्ट, है ना। नंबर टू, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, आपका मैनेजमेंट सही नहीं था। ठीक है, क्या होगा कि आपके में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, दे रहे हैं? है ना। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम, जो जो इसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, क्या क्या पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं ना, उससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ नंबर सी, अदर टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। और कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो ये हैं। पहला, पुअर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट लीडिंग टू डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन। पुअर शेड्यूलिंग of projects leading to delays in implementation, misallocation of fund, delay and sometimes lack of counterpart funding, lack of accountability and transparency, bureaucracy in decision making, and selfishness, nepotism, favoritism by some project manager। क्या क्या है भाई, पुअर शेड्यूलिंग, सही से शेड्यूल नहीं किया गया प्रोजेक्ट को, या फिर डिले कर दिया गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये आपके सही नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है मिस एलोकेशन ऑफ फंड, फंड का गलत इस्तेमाल किया जाना। ठीक है। डिले एंड समटाइम्स लैक ऑफ काउंटर पार्ट फंडिंग, कुछ कुछ काउंटर पार्ट फंडिंग भी होते हैं और उसमें डिले हो जा रहा है, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में फैक्टर किया जाता है। ठीक है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में गड़बड़ होने की वजह से। ब्यूरोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी करना। एंड सेल्फिशनेस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, किसी को फेवरेट बना दिया, नेपोटिज्म कर रहा है, घर वाला को कोई लेके आ गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इस तरह का चीज जो है ना आपको, ये एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का पिक्चर है। ये इतनी बात समझ में आई आपको? हम्म, ये सारे टॉपिक्स थे रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट। है ना? ठीक है, आज का ये सारा टॉपिक जो कवर करना था मेरे को आज कर देता, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वन बाय वन एग्जिट करते चले जाए। ठीक है। और कोई सवाल है तो बोल दीजिए। ठीक।